ओम शांति। Om Shanti. मनुष्य जीवन में मन का चिंतन निरंतर Dans cette चलता vie, है। एक होता है la réflexion दिमाग de में l'esprit est विचार constante. आना, सोच चलना, Une, c'est de créer des चिंतन pensées करना dans l'esprit. और Il y a un peu de निरंतर pensée करते et un रहना। peu de réflexion. Une, c'est de pas rater. L'autre, c'est de réfléchir sur quelque कई chose लोग कहते हैं दिल et से बोलो, réfléchir à quelque chose. आपको कोई बात C'est अच्छी connecté लगी, à notre कोई cœur. बात बुरी लगी, चित पर नहीं Parfois, चढ़ेगा। on dit तो वो qu'il y a संचार des choses होता bonnes, des रहता choses है, moins bonnes, चिंतन mais चलता ça va रहता है, directement à चलता notre रहता है। cœur. Et à ce moment-là, nos वो कभी pensées कभी दुख se का रूप, créent et कभी elles कभी सुख का viennent रूप, en flot. कोई ना कोई ऐसा Et कारण parfois, बन elles जाता créent है de la tristesse ou de la जिसके मन douleur में खुशी नहीं रहती है। तो à हमारे cause de cela. ब्रह्मा बाबा ने Le- जब L'esprit अव्यक्त हुए ressent la tristesse. Alors, Brahma Baba, quand il est devenu बाबा ने एक Avyak, दिन कहा ce कि jour-là, स्वचिंतन à la classe du soir, Baba avait सीढ़ी dit, है और पर चिंतन la पतन réflexion, की सीढ़ी है। c'est une façon तो de जब हम progresser. 6 Et si vous थे, pensez aux autres, बॉडी कॉन्शियसनेस थी, c'est quelque chose qui तो vous, कई बातें चित पर लगती रहती थी। vous attriste. Alors, à ce moment-là, vous चिंतन êtes dans la करते conscience करते du क्रोध corps. का रूप बन जाता Et है, à ce moment-là, nous कभी pensions क्रोध का, कभी sur des द्वेष thèmes का। comme, à ce moment-là, on अब हम peut बाबा के बच्चे, penser à la colère ou la tristesse. सर्वाभिमानी, देही Mais maintenant अभिमानी que nous बनने sommes les लगे। enfants de Baba, la conscience तो थोड़ा सा स्थिति d'âme, quand बना nous sommes en conscience मन d'âme में et non pas en conscience du corps, कि अब हमको et à ce moment-là, on peut स्वचिंतन चलना réfléchir à चाहिए। cela et on peut avoir de l'attention à ça. स्वचिंतन मतलब Et en मैं ce moment, on doit कैसे penser हूँ, à l'âme. बाबा से मेरा संबंध Qu'est-ce que ça veut कैसे dire, अच्छा हो, penser à l'âme? जो भी हमारे Comment संबंध est-ce हैं, que je चाहे peux आत्मिक m'améliorer? Comment je या peux améliorer mes relations avec बुद्धि का Baba? चिंतन चले। Réfléchir aux souvenirs, तो l'inculcation. स्वचिंतन के लिए फिर On दूसरा doit एक अभियान réfléchir à बना ces है, sujets. वो है Et स्व ça, c'est la अवज्ञा चिंतन। réalisation du soi, c'est la réflexion du soi, sur le आजकल soi. बाबा 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। Alors, Baba a pensé de réfléchir à स्व cela. दर्शन, Aujourd'hui, Baba स्वरूप focalise plus दर्शन, sur la दर्शन transformation du soi, नाम चक्र में tourner le disque de la réalisation du soi. जिसका एक बाबा C'est-à-dire, कलयुग comment में est-ce que प्रवेश j'ai किया, joué mon rôle dans ce कलयुग सतयुग में, cycle त्रेता में, à travers द्वापर les युग में, 5 formes. सतयुग में, Et c'est la सब pratique des बहुत 5 अच्छा formes. सिखाते हैं। Quand j'étais à l'âge d'or, l'âge वर्ण में आए, d'argent, de cuivre, et Baba गुरु में explique de आए, différentes manières et à travers les तो पूरा différentes जगत formes, चक्रधारी। à différents corps, vies, लेकिन अब हम कहाँ पर et हैं? on a besoin de tourner le disque. Mais en ce moment, où en हमारा sommes-nous? On doit अब क्या vérifier. करना है? Et qu'est-ce qui nous reste à faire? Où est-ce qu'on s'en va? On doit vérifier notre progrès. Et नए Baba nous चक्र dit के en ce आने से moment, पहले, le शुरू होने cycle से पहले est à la fin. हम सभी Et घर avant लौट आएंगे। la venue du nouveau cycle, on doit retourner à la maison. सतयुग में On va आएंगे। retourner à la maison au monde des âmes. Et ensuite, on स्वदर्शन ira à l'âge d'or. भक्ति मार्ग में भी महत्व है, Donc, tourner le लेकिन disque de la साधना मार्ग में réalisation, c'est aussi, ça a beaucoup de चक्रधारी, valeur dans. हम उसको स्वदर्शन चक्र कह सकते हैं। तो जब भी कोई Krishna, आसुरी वृत्ति, कोई आसुरी संकल्प Krishna a toujours ce disque dans ses mains. Alors, quand il y a करने quelque के लिए chose de करने के लिए démoniaque ou de négatif, चक्र चलाते हैं। pour en finir avec ce, तो il स्वचिंतन utilisait ce स्वदर्शन chakra du चक्रधारी disque de la réalisation. Alors, penser इन्होंने à कहा l'âme et tourner le disque de la réalisation du soi, दूसरा on doit le pratiquer स्वदर्शन continuellement. चक्रधारी Et deuxièmement, जो नहीं हो पाता qu'est-ce है que ça veut dire? तो उसको कहते हैं परदर्शन। Qu'est-ce que ça veut होता dire? Que है ये कि certains ne peuvent संकल्प pas tourner le disque.
Ça veut dire qu'ils ne pensent pas à leur âme, ils ne pensent pas au soi, ils pensent aux autres. Et pourquoi ceci fait cela? Ou on pense aux autres parce que on regarde à l'extérieur, on regarde les autres, comment ils font les choses. Parce qu'à cause de ces 2 yeux physiques, on regarde toujours à l'extérieur. Et ce que Baba nous dit, c'est OK de regarder à l'extérieur, mais regardez tout le monde comme des âmes. Alors, pensez à la connaissance quand vous regardez les autres. Et à travers, pendant la journée, on doit tenir notre bilan et réfléchir à pourquoi on pense tant aux autres. Et en ce moment, on doit porter attention que chacun a son rôle à jouer. Chacun a ses sanskars et chacun est sur ce chemin de faire des efforts. Mais pendant qu'on pense aux autres, c'est un moment très précieux pour nous et nos pensées sont trop précieuses, très précieuses. Tout est précieux à l'âge de confluence. तो अंदर में थोड़ा अटेंशन दें, चेकिंग करें। जब भी परचिंतन Donc, à l'intérieur, on doit porter plus attention et réfléchir à cela. और तीसरा Quand il y a des चिंतन या ज्ञान pensées का चिंतन au sujet des autres, on met un point final. मनन चिंतन Et l'autre या élément de la contemplation, c'est la फिर contemplation दूसरा de la ज्ञान का connaissance, मनन ce qu'on चिंतन appelle le या baratage. ज्ञान। Plus तो जो on आंसर आएगा baratte la जो हम जो देख connaissance, रहे हैं उसका उत्तर ज्ञान से आएगा। alors le type de réponse que l'on आज reçoit, मैं ड्रामा का si on regarde à l'extérieur, हर एक के लिए मुझे आत्मिक भाव रखना on है। va voir les scènes du और अंदर drama. बाबा कहते हैं Mais je dois शांति avoir, chacun doit avoir sa vision de l'âme, la conscience d'âme क्योंकि हर एक में कोई ना कोई pour regarder संस्कार les autres à l'extérieur. Et aujourd'hui, जो Baba nous a parlé बाबा des हमेशा différents, कहते que हैं chacun a ses saskars différents कि बाबा हमेशा कहता है बच्चे विशेषता et tous ont des spécialités et des qualités. एकदम चिंतन ही आएगा कि मैं Alors, किसकी Baba nous dit जरूरत है de regarder les किसकी spécialités, non les कमी है qualités. Alors, et de ne pas जिसकी regarder विशेषता है les faiblesses, mais वो बढ़ा regarder है les अपनी qualités. विशेषता के कारण मम हमारी Et si les बहुत gens, les âmes progressent, स्पेशलिटी c'est grâce à leur spécialité. किसी Regardez चीज Mama, का par exemple. फैसला निकालना चाहते Elle हैं nous आप क्यों उठा disait रहे हो qu'à chaque fois ठीक ना que vous voulez enlever un उठा लेते हो sanskar de l'intérieur, उठा si लेते vous हो voulez brûler un संस्कार को sanskar, और फिर और नहीं और भी ज्यादा चिंतन करते हो उसका तो बड़ा गहराई में देखे alors जाए si quelqu'un essaie d'enlever sa faiblesse, vous les prenez. Alors Baba nous disait, si on pense aux हमारी autres, कमाई cela va कम हो nous जाती है tirer vers le bas. तो ज्ञान का चिंतन जितना Et c'est à ce करेंगे moment-là on arrête de gagner du revenu. Donc, तो वो on संस्कार baratte la ज्ञान में connaissance à la एडिट करता place. है पर चिंतन को Et à ce moment-là, ça devient nos sanskars. बाबा को हम जब भी Et le कहते हैं हमारी sanskar de चैतन्य penser les autres sera बाबा हमारे remplacé सामने par किया notre ना baratage de la बाबा connaissance. हमारे सामने किया ना Alors, regardez les autres तो et dire, ज्ञान का qu'est-ce que ceci चिंतन fait? करो Quelqu'un fait cela? फिर सबसे Et अच्छा elle disait, ज्ञान maman nous वो disait, कहते हैं प्रभु et चिंतन pensez simplement à la बाबा के connaissance. गुण बाबा के Et les संबंध pensées बाबा pures की et élevées de शक्तियों का Baba चिंतन करते रहो et pensez aux vertus de जिस Baba, à la संदर्भ connaissance de से Baba. न Pensez केवल à चिंताएं Baba. दूर होंगी Si vous voulez penser à quelque chose, pensez à लेकिन Dieu. चिंतन से Alors, quand on हमारा चित्त pensait भी à Baba, शांत on रहेगा réfléchit à la connaissance बहुत et à ce स्वस्थ moment-là, on रहेगा sera plus paisible et plus propre. और हमारी वाणी और दृष्टि Et nos paroles et जो notre चिंतन में होता है drishti वो वाणी में आता sera है plus pur कुछ parce भी que toutes nos pensées ऐसा हुआ हो et रहा nos है ऐसा हो रहा paroles है et nos pensées, tout sera plus pur. चिंतन Parce que l'autre façon de penser, ça s'imprimera फिर en बचेगा nous. Ne pensez pas à cela, हमारी ne वाणी से réfléchissez pas देखना à cela. पड़ेगा
Parfois, notre drishti ressemble à ce que l'on pense, alors ça se reflète à travers nos yeux. Et et à ce moment-là, notre drishti ne sera pas aussi puissant. Et c'est pour ça que Baba nous dit que c'est à travers nos yeux, ce que l'on reflète à travers nos yeux. Quand on prenait le drishti des dadis, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour divin dans ses yeux, dans leurs yeux, parce qu'ils ne faisaient que penser à Dieu ou à la connaissance tout le temps. Alors, quand on allait voir Daddy Janki, elle était tout le temps là, mais elle pensait à Dieu. Alors, on avait l'impression qu'elle ne nous écoutait pas, mais on ressentait qu'elle était plutôt connectée à Baba tout le temps, parce qu'elle ne prenait jamais la peine ou les énergies des autres. Alors, quand elle voyait que ces vibrations viendraient avec les âmes qui venaient devant elle, alors à chaque fois qu'on allait voir Daddy, ou qu'on voulait partager quelque chose avec Daddy, on ressentait: «Ah, Baba est au-delà, elle sourit, mais elle n'est pas là». Parce qu'elle ne prenait jamais la peine des autres. Ce que l'on partageait, elle n'absorbait rien de ce qu'on lui disait. C'est difficile quand on pense aux autres, automatiquement on absorbe ces énergies et il n'y aura pas ce niveau de pureté qu'on cherche dans notre drishti, notre attitude, dans notre façon de voir. Alors, si on veut faire l'effort d'être parfaite ou complète, et Baba nous donne ce temps-ci pour le faire et il nous aide pour qu'on ait tous cet objectif qu'on doit contempler et penser à la connaissance et à Dieu et ne pas penser du tout aux autres et ne pas regarder les autres non plus. Et ainsi, la réalisation de soi est tournée, le disque de la réalisation de soi, c'est la venue du progrès. Et c'est ce que Baba nous disait. Et il disait, ceux qui nous diffament ne sont pas, sont nos vrais amis parce qu'ils nous aident à progresser. Alors ainsi, ils nous font comprendre nos faiblesses. Et si on découvre qui nous critique, nous permet de trouver notre faiblesse. D'une certaine manière, ils sont nos amis. Alors, on doit les louanger, les remercier de nous avoir aidés à trouver notre faiblesse. Alors, si vous recevez, par exemple, si vous recevez des compliments, vous êtes content et si vous ne recevez pas de compliments, vous ne l'êtes pas. Alors, réfléchissez à quelque chose comme ça. Faites tourner le disque de la réalisation de soi. Réfléchissez et contemplez la connaissance et pensez surtout à Baba et pas aux autres. Om Shanti.